So the first question is, what is model alignment? Alignment in AI safety is the goal of designing and training an artificial intelligence system so that its observed behavior consistently advances the objectives, ethical principles, and preferences set by humans and never pursues unintended or harmful goals of its own. In other words, an aligned model does what we want it to do, not merely what we literally typed, and it keeps doing so even in novel situations. Also, as we can see on the screen, model alignment is the process of ensuring an AI model's goals and behaviors are in harmony with human values and intentions. It's about teaching a powerful LLM not just what it can do, but what it should do. And as we can see on the screen, there are three important pillars of alignment. One, the AI needs to be helpful, it needs to be always honest, and then it needs to be harmless. तो कहने का मतलब ये हुआ कि मॉडल अलाइंड तब है जब मॉडल के गोल्स और बिहेवियर्स जो हम इंसानों की चाहते उसके साथ हारमोनियस हैं, उसके साथ इन सिंक हैं, और एक पावरफुल एलएलएम या पावरफुल मॉडल वो नहीं करेगा जो वो कर सकता है, वो वही करेगा जो उसको करना चाहिए. और मॉडल अलाइनमेंट के तीन इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं, तीन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियाज हैं. एक, उस मॉडल को हमेशा हेल्पफुल होना चाहिए, मददगार होना चाहिए. दूसरा, उसको हमेशा ऑनेस्ट होना चाहिए. और तीसरा, उसको हमेशा हार्मलेस होना चाहिए.